Today we are doing a makeover for Sarwat Gilani. She is a very talented actress, friend, celebrity and wears many hats. Hi guys, I'm Sarwat Gilani and I'm here at NABILA salon. I thought it was time to change a little because generally in life I try to keep it very simple and I try to play it very safe. You will always find me with dark hair, a liner and that's it. But I thought it was time. It's been 20 years that I've sort of remained with the same look. My go-to person is always been NABILA. सरवत ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा कुछ चेंज हो क्योंकि मैं अपने लुक से बहुत बोर हो गई हूँ. हर चेंज से पहले एक कंसल्टेशन ज़रूरी है. एंड आई रियलाइज दैट सरवत्स हेयर यूज्ड टू बी वेरी कर्ली एंड मच लॉन्गर. तो इनके बालों में टेक्सचर चेंज हो गया है, बहुत फाइन हो गए हैं और एंड्स बहुत ड्राई थे. तो हमने डिसाइड किया कि पहले तो हम इनको एक अच्छा सा ट्रिम दें ताकि उनके बाल थिक लगें, स्ट्रेंथ आए बालों में और एक शार्प लाइन, स्क्वायर, blunt looks are more modern. Sarwat has a big forehead and which is a really good thing because you can carry curtain bangs, flicks, sweeps, whatever you call it, कि face पे थोड़े से बाल आएं. It just makes you look younger and fresher. We're doing something with a hair color. I feel that because I have thin hair, I can't really experiment with my real hair. So NABILA suggested a really spectacular thing, which was we experiment with the extensions. सरवत का हेयर कलर रिच ब्राउन है और इसमें हमने सोचा कि बिल्कुल केमिकल ना लगाएं. तो मैंने ये डिसाइड किया कि उनके एक्सटेंशंस को हम एज अ क्लाइंट यूज़ करें. हमने इनके एक्सटेंशंस को कट और कलर इस तरह से किया कि वो जब एक तरतीब से लगाएंगी तो देखने में वो लगेंगे कि इनके रियल बाल हैं और इस पे फ्रेंच बालियाज हुआ हुआ है जो कि एक ट्रेंड है जो काफ़ी दिनों से इन फैशन है. Oh my God! That's some other way. Sarwat has beautiful skin, a beautiful complexion and lovely features. But keeping this glamorous look in mind, we are using Zero liquid foundation. उसका shade हमने ivory use किया है. It's very lightweight and has medium coverage. It's excellent for more glamorous, more evening looks, bridal looks, etc. This lip color is a pink nude, which is again one of my mixes and looks lovely for this look. अब मैं जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी.